No, I have not styled my hair. Of course, you see some spikes, but that is because of the electrifying cast that I have here with me. A very warm welcome to NDTV. I'm Arun Singh, and with me is Aarya Season 3's star cast, and as I said, absolutely electrifying. I mean, we've seen the trailer. You're ferocious. And it is, inspiring. And at the same time, I also want to touch upon the fact that if you're active on Instagram, you are also being cited as a motivational speaker because there are so many reels and videos and they're all your interviews. So are you considering that career option as well? It's pretty cool to be a motivational speaker. I know, I love it, but thank you. But can I be an actor, please, for a little bit longer? I just came back. Like, please, we are not complaining at all. We are not complaining at all. But this is something that we want from you, and more of that. That's very, very kind of you, Janmeri. But I think the thing that I've managed to do over the last 3 decades of being in the public eye is दिल से बात करती हूँ. कई बार अच्छा लगता है, कई बार अच्छा नहीं लगता है, but I try to keep it as honest as possible, ताकि मेरे तजुर्बे से किसी का फायदा हो. And that's the only attempt. I think that I managed to do that on social media without being a motivational speaker. However, I do that sometimes. And I enjoy it because it allows me to interact with people. And the reason I wanted to be famous since I was a little girl was because I wanted to be with people. I did not want to be alienated. I did not want to be a star. I did not want to be any of this. I wanted to be with people. And so to become a star, it allows you that privilege to just be with people. Around 30 years of public life, how do you sum that up? You can't sum that up. It's just a ... More to come. इलिया जी, हम अगर क्योंकि करियर की बात कर रहे हैं, आई थिंक 83 में आपकी पहली फिल्म आई थी. 40 years, 4 decades, बहुत लंबा. आज ही ना कोई मुझे माला पहना दे. That's iconic, इलिया जी, for you guys. I mean, oh God, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया. वरना क्या है कि मेरे अंदर तो अभी एक लर्नर है जो जिसने नया कुछ सीखा है, और मैं चाहती हूँ इसी तरह से मैं करती रहूं. वही उसी की वजह से शायद रेलेवेंस है, क्योंकि आप वो लर्नर वाला एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रही हैं. लेकिन जैसे आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आज आप OTT में काम कर रहे हैं और आपने ऑफ कोर्स डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स भी एक्सप्लोर किया, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो टीवी शोज हो, मूवीज हो. तो क्या बदला है? स्टेज में तो मैंने अभी 40 साल वाकई में मनाए हैं, तो शोर क्या है, इतने नाटक. बदला कुछ नहीं है, ऑडियंस की मानसिकता बदली है. और मैं तो वैसे भी कोई इतनी सुपर डुपर स्टार नहीं थी. आई एम एन एक्टर. तो जहाँ मुझे जो रोल मिला, गाना मेरा एक दूसरे तरीके की चीज़ थी, तो जो भी मुझे रोल मिला जिसमें मैं अपने आप को अभिव्यक्त, व्हाट शी वाज सेइंग, कि एक आपके अंदर एक इच्छा होती है कि आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करें, विभिन्न पात्रों को आप जिएं, खुद ग्रो करें, उन्हें कुछ जाने अनजाने दे जाएं. तो वही हमारा प्रोसेस है. और उसी प्रोसेस में मैं पहले मैंने ज़्यादा टीवी नहीं किया है, पर OTT पे मैं जो आई हूँ और जिस तरह का कंटेंट आने लगा है, तो अब मुझे लग रहा है मेरी लॉटरी तो अभी खुली है कि जहाँ अब ना वो उम्र का तकाजा करते हैं, वो अच्छे एक्टर्स को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं और किस तरह की कहानी है. फिर वो ये नहीं देखते हैं कि आप कितना करिए आए हैं. तो मुझे OTT में काम करना बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर से आर्या में, क्योंकि ऐसे लोग सोचेंगे कि इसमें इला अरुण क्या कर रही हैं, इस तरीके के लोग मौजूद हैं, तो सडनली वेरीज, क्योंकि एक ट्रेडिशनल आपकी इमेज है. पर राम मधवानी ने जिस तरह से मेरे से काम करवाया, और जो आपने कहा कि मैं एक्सपीरियंस्ड वो नहीं हूँ, उन्होंने कहा भूल जाओ, वॉट एवर यू लर्न इट शुड बी फॉरगॉटन, इट शुड बी अनलर्न, नए सिरे से. तो आर्या मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहा. लवली है. पहले सीजन एमी की नॉमिनेशन उसे मिली, वो पल अगर उसको याद करना चाहें आप, जब आपको पता चला कि वो नॉमिनेशन मिली है, तो क्या आपका रिएक्शन था? तब तक तो मुझे लगा एमी अवार्ड्स जो होते हैं वो हो चुके थे, तो मैं सीजन 2 की डबिंग के लिए जा रहा था. ये कर रही थी डब, मैं ऑन द वे था, जब मुझे मनीष जो सीजन 1 में हैं, शेखावत, उनका मैसेज आया कि वी बीन नॉमिनेटेड. अभी तो खत्म हुआ. नहीं, ये इंटरनेशनल एमीज है.
I was like, wow, and what a coincidence. We are dubbing for season 2, and ये पता चला हमें. Of course, बहुत खुशी हुई. And I wanted to be there, and I was really a little sad कि she couldn't be there. But I went, and I wanted to experience that, and it was truly a pleasure because मैं था, राम माधवानी थे, अमिता थी, कुछ और लोग थे, हॉस्टा से लोग थे, और बहुत मज़ा आया. और हम लोग ठीक है अवार्ड्स के लिए काम नहीं करते, पर जब आप इतने बड़े मंच पे जाते हो तो बहुत हौसला अफजाई होती है आपकी खुद की, और बहुत प्रेरित होते हो और सबका अच्छा काम देखते हो, एंड यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, तो अच्छा लगता है. And you're one of 4 in the world. Yes. I mean, and the other shows were also amazing that were nominated. Yes. So we were all like, wow, India is showing up Yes. right there. It's a huge moment. And I'm telling you, we were great contenders, top contenders actually, and ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है उस रात का, ड्रामा सीरीज कैटेगरी जो है, तो वो लास्ट अनाउंस होती है, और हमारे बगल में ही तेहरान वाली टीम बैठी थी. तो जैसे ही नॉमिनेशंस अनाउंस हुए एंड द विनर इज, और 2 लोग पब्लिक से गए आर्या, ठीक है, तो हमें तो लगा बस ठीक है, और वो कोई और किसी और देश के कोई और लोग थे. एंड देन ऑफ कोर्स तेहरान अनाउंस हुई, और हमारे बगल साइड के टेबल से लोग उठे बड़े खुश. एंड देयर वाज अ सीनियर ज्यूरी मेंबर हु केम अप, दिस लेडी, एंड शी वाज gracious to come and kind enough to tell us that I voted for you, and I really wanted you to win. And we were like, कोई बात नहीं, season 2, season 3, season 10. आते रहेंगे. Of course. Indrani, how did this come to you? और जब आपके पास ये मटीरियल आया तो आपने किस तरीके से रिसीव किया? What was your reception like? So there's a history to it, I'll tell you. Many years back, I had auditioned for one thing with Ram Madhwani. मैंने ऑडिशन दिया, एक ड्रग डीलर वर्ल्ड का एक कुछ था, ठीक है. दैट टाइम इट डिडंट हैव अ नेम, देयर वाज नो प्राइमरी कास्ट, नथिंग. आई हैड ऑडिशन एंड देन नथिंग हैपेंड. इट फिजल्ड आउट. आई थॉट इट वेंट अवे, समवन मस्ट हैव डन इट. Years after that, I watched Aarya 1 on Hotstar. I like, यार ये तो वही शो है. Yeah. So ये तो वही शो है. अच्छा, तो ये वाला शो था. And then I see okay, Sushmita Sen is playing Aarya, and I saw the role I had auditioned for, and I guessed. Mind telling us which character? So then that happened, and then after that, for the 3rd season, when I was approached for this role, so then I thought that यार destiny भी कुछ चीज होती है. उस टाइम पे नहीं मिला, चलो भी हाँ finally. Yeah. That's fantastic. Yeah. So finally I end up working in Aarya, and yeah. Coming back to you, हम जिसमें जितने भी डायलॉग्स हैं उसमें एक माँ का ऑफ कोर्स रिलेटेड एक डायलॉग है, और हम आपको भी देखते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग मदर. हाउ मच ऑफ दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू योर कैरेक्टर? A lot, I'm sure. But I've been a mother for 24 years now. So I've done other mother roles as well. I just think that जब एक किरदार को बहुत डिटेल में लिखा जाता है, उसे एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है जो कि आर्या में मुझे दिया गया है. Then to flesh it out, you of course bring in your experience and your truths to it to make it real. But it has to be written well. उसका जो एक दायरा होता है, that point A to point Z, you can't cross this line. That line was beautifully etched out in Aarya. So I brought in the experience, but it's also credit to the crew because they put together a story and an arc and a character that was just easy to mold. And how did your daughters react to it when they were watching the previous season? Hell yeah! Because I've taught them not to be very well behaved when they're reacting to my work. I would like them to come They're up. trained well. Yes, yeah, they've been, only for my work. Otherwise, be very well behaved. But no, both of them. So one is 14, the other's 24 years old, and both of them reacted to it like, finally, So, yeah, I think God's been kind. And as you pointed out, the writing is very strong, and I think that's where the credit is due. And on the other hand, the dialogues are also very strong. There's one which says, "शुरुआत मजबूरी से ज़रूर हुई थी, लेकिन खत्म मेरी मंजूरी से होगी." That's also such a nicely written dialogue. Nice. Yeah, when you decide that you are not a product of your destiny, but you're about to write it or rewrite it because you don't like what's being served. That's Aarya. I was going to ask, has that happened to you in your like public life?
that you... It's happened to me at every milestone in my life. Every milestone. It's a choice to be made that I go for what is written or I... Have you seen this? What is it? It's in Latin. It means, it says otviem inveniem ot faciem, which means I'll either find a way or make one. No is not an option. I live by that. So literally, this line from Aarya's trailer, Yeah. it embodies that. वाओ सुपर इम्प्रेसिव नाउ हम बात कर रहे थे ओटीटी की वजह से लैंडस्केप पूरा बदल गया है सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज की डेट में उसे आप कैसे आर यू यूजिंग इट एक्टिवली या फिर आप सिर्फ उसे एक प्रमोशन का जरिया देखती हैं कैसे देखती हैं आप सच्ची कहूँ तो प्रमोशन का जरिया देखती हूँ जब मेरा नाटक आता है लोग कहते हैं दर्शक नहीं आएंगे अब आपको करना पड़ेगा और जो कुछ मैं अगर आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मेरी लड़की कर रही है क्योंकि मुझे आता नहीं कई बार वो कहती है आपने तिबारा कर दिया कई बार कहती है आपने गलत कर दिया तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर रही होती हूँ वहाँ बट शी इज़ वेरी गुड मेकिंग इन रील्स एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर पर मुझे ये सब कुछ आता नहीं है पर मैं ये समझ गई हूँ शी इज रियली फनी बाय द वे बहुत अच्छी रील्स बनाती हैं आपकी बेटी मेरी डॉटर ना हाँ ये सच्ची बात है इशिता इज रियली डूइंग वंडर शी मेक्स फैब रील्स या वो बनाती है पर आपने अच्छा हुआ कि आप मुझसे बुलवा लिया क्योंकि मैंने उसको इतना डांटा है कि तुम रोल करो रील मत करो सारे टी-शर्ट रोल करो रील नहीं हमेशा मैं यही कहती हूँ बाद में पता पड़ा कि वो मुझसे चिढ़ गई जब मैंने कहा हमारे नाटक की कुछ रील बनाओ क्योंकि दर्शक फाइनली देखिए समय के साथ हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन से युग की हूँ त्रेता युग की हूँ द्वापर युग की हूँ किस युग की हूँ बट आई थिंक समय के साथ बदलना पड़ेगा और ये इंस्टाग्राम और ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है भैया तो साथ रहना हमारे किसी भी बहाने में आप तक आ जाऊंगी बट इज इट इंटिमिडेटिंग एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट कि एक तो ओटीटी पर इंटरनेशनल कंपटीशन एंड सेकंडली अगेन सोशल मीडिया इज आल्सो अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाइक यू आर कंपीटिंग विद एवरी सिंगल पर्सन on the face of this earth. No, I don't look at it that way. You're doing your job. You do a good job and it will be viewed everywhere, accepted everywhere, liked everywhere. सोशल मीडिया लाइक मैम सेड मैं भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ मुझे थोड़ी दिक्कत होती है और मैं आया ही इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे कर्टसी मिस सेन बिकॉज जब सीजन 1 आया और महीना बीत गया ठीक है तब मैं आया इंस्टाग्राम पे एंड यू नो आई सो she said that you know the world's talking about you and the world's talking about our chemistry you've done so well you've got to make some noise about it this that I said chalo dekhte hain kya hota hai and then I got into it and like I'm telling you were not on Instagram before the season release no मुझे ये नहीं पता था month after जब मैंने कोई फिल्म करी तो उनका आपका ट्विटर का आपका हैंडल बताए मुझे कैटल का हैंडल पता है कब का पता है ट्विटर का क्या होता है ट्विटर हैंडल आई कॉल्ड इशिता इसलिए अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं बोल रही हूँ सच मानिए मेरी लड़की बोल रही है क्योंकि मुझे आता नहीं मैं गड़बड़ कर जाती हूँ Sorry, you want to complete? ना तो बस उसी मैं भी ज़्यादातर आई वुड लाइक मतलब मेरी लाइफ थोड़ी बोरिंग सी है और मैंने कुछ मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं उनसे भी कंसल्ट किया ठीक है तो एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं बड़ी स्टार हैं उन्होंने वो भी उतनी कंफर्टेबल नहीं है पर वो डालती हैं आई थिंक शी इज़ ऑल्सो गेटिंग यूज्ड टू इट सो शी सेड कोई नहीं एक पौधा उगता हुआ डाल देना कभी ठीक है पौधा की उग रहा है ठीक है कुछ सब शी सेड दैट these are changing times and you need to be there and I said okay and yeah strangely a lot of people actually not just fans or viewers a lot of people जो काम के हैं say casting or producers tend to contact you there certificate so yeah That's true. But that also subjects you to a lot of trolling and hatred. Doesn't that bother you? So the thing is, luckily, I have 90% of lovers on Instagram, on social media at large, which is very rare. So if you look at my timeline, it's unbelievable the kind of people I attract. And it's beautiful. But sometimes those 10% show up, and I look forward to it when they show up. Then I start restrict kidhar hai, block kidhar hai. And then I go ahead and restrict and block them. Best. And I've had people write back to me from a brand new account saying, I made a mistake, ma'am. I won't use that language again. Please unblock me. And then I unblock them.
And you rightly said there are mostly positive comments, and I usually do it with my guests, which is I make them react to Instagram comments. I've just chosen 3. These are all lovely comments from your posts. Here's this one which says, "You never miss a chance to compliment yourself, ma'am." Then there's a laughing emoji. Love it. And I responded to it. What's your reaction? We want The a video response response. I wrote was, "It's the most empowering thing you can ever do. Try it, love." Wow. The second I'm one. learning. Yeah. You've got to learn to compliment The yourself. second one is, "I'll always know you as our Miss Universe only." That's Shahzad Khatri who's written this. Thanks, Shahzad, but I'm more than Miss Universe. Jan Meri, get to know me. And last one, "You should be cast as a queen in a regal movie. Like Cersei." That's how it's pronounced? Yeah. You should be cast as a queen in a regal movie. What do you have to say about that? My life is royalty. I live it like a queen. That should suffice for now. Lovely. That's a great concluding line. Thank you so very much, and all the very best for Aarya Season 3. Oh, thank We're looking forward to it. Thank you Thank so much. you. Such a pleasure. Thank you for This this is Arun interview. Singh signing off for NDTV.